हो सकते हैं. Hi, good evening, everyone. So today I will be teaching you English grammar. So most of the time क्या होता है कि हमें grammar तो आती है, right? Everybody knows कि is MR क्या होता है, subject क्या है, verb क्या है, object क्या है, tenses कितने type के होते हैं, right? And sentences structure क्या होता है. Most of the time everyone knows how to construct a sentence. But क्या होता है कि हम अपनी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि एक होता है लॉजिक, रहता है ग्रामर का, राइट? ग्रामर सभी बोलते हैं मैम हमें तो आती है ग्रामर, लेकिन भूल ये जाते हैं कि उसका यूसेज या इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे. सो टुडे लेट्स लर्न द यूसेज ऑफ tenses in our daily life, right? So as you know, there are sentences in English, right? So today let's learn the first three sentences so that we can understand on each and every base. All right, so here we go ahead. So first it would be simple present, right? Simple present, we know the rule, S or ES, right? So most of the time we know that okay, how things goes on. So here we will be going ahead एस और ई एस. अब आप बोलते हैं मैम एस और ई एस कैसे लगता है और हाउ डू वी यूज इट, राइट? बट लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड एनीवेयर. मेक श्योर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस या ई एस लगता है ऑन द बेसिस ऑफ अ सिचुएशनल सेंटेंसेस. सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स हियर. ओके, नंबर 1, शी ईट्स. She eats, okay? And number 2, he sleeps. अब देखिए, this is very easy thing that you are able to identify the example here. That she, of course we know, he we know everything. She लड़की के लिए यूज किया जाता है, he लड़के के लिए, right? अब eats का क्या मतलब है और sleeps का, जैसे मैंने पहले भी रूल में आपको बताया था, S या ES followed by. Okay, so let's understand the examples here. Okay, so she eats and he sleeps. So S is added on here. So please concentrate on this, that this is very logical thing कि आपको ये छोटी सी example के हिसाब से हम सीख सकते हैं उससे, ठीक है? So now understanding one thing, that what is the example of another sentence. Okay, so what it could be. सिंपल प्रेजेंट कर लिया, अब सिंपल पास्ट की एग्जांपल हम देखते हैं. सिंपल पास्ट का हमेशा रूल यही रहता है, V2 उसमें एड ऑन किया जाता है, V2 एड ऑन किया जाता है. अब V2 आप कहेंगे मैम V2 क्या है? V2 का मतलब होता है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब सेकंड फॉर्म, और जब हम फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं उसमें आ जाता है V3. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड V2 कैसे होता है. जैसे डू, डिड, डन. अब इसमें सेकंड फॉर्म क्या थी, V2 क्या था, यहाँ पे आता है डिड, राइट? सो एग्जांपल के लिए मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे डू, did and done here, right? So here is the V2, here is the V1, and here is the V3. So this is just for an example that you don't get confused at all. Okay, so now here we go with the simple past tense. So now number 1, we will be understanding what are the examples here. Okay, so I walked to the store. I walked to the store. To the store. अब देखिए यहाँ पे V2 क्या है. As I told you very clearly, V2 का मतलब हमेशा V2 की वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि V1 हमें पता होना चाहिए, V2 पता होना चाहिए और V3 पता होना चाहिए. ओके, so now I walked to the store. So number 2 example we can take here. We played board games. We played board games. Now you can understand what is the V2 here. This is V2 again, and walked because ED is followed by and ED is followed by. So now you can understand the point here that see, we have so far come across,
हमारे दो टेंसेस के लिए, राइट? दो टेंसेस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है और सिंपल पास्ट टेंस क्या है। अब देखिए, आप लॉजिक एक अपने दिमाग में यही रख लीजिए, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखनी है या इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीखनी है तो हमें टेंस चार्ट तो आना ही चाहिए। चाहे आप हुक या क्रुक से सीखिए, लेकिन हमें टेंस चार्ट आना ही चाहिए, राइट? So I hope you are able to get it, and we will be moving forward. Okay, so now getting back to the again point कि जब तक आपको सिंपल प्रेजेंट की एग्जांपल नहीं आती है, सिंपल पास्ट की एग्जांपल नहीं आती है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है सिंपल फ्यूचर को कंप्लीट करना, क्योंकि वो तो V3 होता है। V3 हम सभी को वर्ब्स की फॉर्म्स नहीं आती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम ना एक चीज को मिस कर देते हैं, वो क्या रहती है? हम कहते हैं मैम ग्रामर तो आती है, और आपसे अगर पूछा जाता है कि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स आती हैं, तो आप कहते हो नहीं आती हैं। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वर्ब्स की 3 फॉर्म्स नहीं आती हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि जब भी आप अपना रूट शुरू करते हैं, रूट बोल सकते हैं, फाउंडेशन बोल सकते हैं, इंग्लिश में शुरू करते हैं, तो आपको हमेशा वर्ब्स की 3 फॉर्म्स तो आनी ही जरूरी है, एंड इट इज मस्ट। ओके, so please be very careful that you should know 3 forms of the verbs in English if you want to improve your spoken English language, or you want to get your hands on grammar. Okay, so now moving further. Okay, so now moving further will the point will be simple future. Simple future. Okay, and it will be will plus V, right? So end of the day, we know that how we are going ahead with it. All right, so we will be going ahead will plus verb, right? Will plus verb. We, of course, I am writing everywhere, I have written we, so please don't get confused. We means verb only. Okay, so now getting back to the point, we will be understanding what are these sentences again. Okay, so now we will be going with the number 1 example of our simple future tense. Okay, so now it will be I will go to the market. I will go to the market, right? I will go to the market. अब now you can understand will क्यों आया, क्योंकि हमारा रूल ही यहाँ पे लिखा हुआ है will plus verb. Will plus verb. अगर आपको पता होना चाहिए कि that what it is, so we will be focusing here that I will go to the market कि मैं बाजार जाऊंगा। अब गा आ गया यहाँ पे, जाऊंगा, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जाऊंगा समझ नहीं पाते हैं, तो अपने को क्या करना है? I will go to the market, I will go to the party tonight, I will go to my home today, I will go here, I will go there, I will go to my office tomorrow, I will go to my home, and I will go to the party tomorrow. So making sure that will का मतलब यहाँ पे यही आता है कि जो कि will के साथ जोड़ा जाता है. Okay, so please be very careful that we have to understand these things very logically, as well as थोड़ा सा rule इसमें आता है. So yes, going for the another example. She will cook today. She will cook today. अब देखिए, वो खाना आज बनाएगी, वो आज खाना बनाएगी, ठीक है? वो आज खाना बनाएगी, या she will cook today, she will cook tomorrow. आप देखिए, कंफ्यूज नहीं होना, tomorrow भी हो सकता है, tomorrow हो सकता है, या day after tomorrow हो सकता है. She will cook tomorrow, she will cook today, she will cook day after tomorrow. So it is depending on the situation कि कैसे situation जाती है. So we have to be very careful that how things are going ahead. Okay, so now let's recap or recapitulate everything once again, that what are these 3 tenses in English, so that we understand how you are able to make a sentence structure. I'm repeating again so that we understand what are these tenses for today. Okay, so we have learned today 1 and 2, and number 3 we have learned also that these are the simple logics here. अगर आपको ये rule आते हैं, तो then you will be able to understand how you are going to go ahead. All right, so I'm repeating again, make sure you are able to understand what is the subject, what is the object, as well as helping verb or a verb here. All right, so I hope I'm able to help you out with this, and daily you have to practice these rules so that
on daily basis you are able to go ahead accordingly, so that के daily basis पे आप कम से कम 20 से 25 मिनट दीजिए सिर्फ रूल्स को समझने के लिए, चाहे वो ग्रामर का कोई भी रूल क्यों ना हो। क्योंकि देखिए आपको अच्छे से पता है कि until और unless आपको ग्रामर का टेंस चार्ट नहीं आता है तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा प्रेजेंट में क्या बोला जा रहा है, इज एम बोला जा रहा है, या आप बोलेंगे कि मैम फ्यूचरिस्टिक कैसे बात करेंगे, विल लगाया जाएगा, विल बी लगाया जाएगा, विल हैव बीन लगाया जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हम बहुत कर जाते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू लर्न दीज रूल्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और मूव अहेड इन योर लाइफ on the daily basis of your English grammar. So yes, I hope these things are very helpful for you, and please make sure, even I am writing down here, verbs are very important for you to learn, because if you don't understand these things then the problem आती है present form नहीं पता रहती है, पास्ट फॉर्म भी नहीं रहती है पता, एंड फ्यूचरिस्टिक अपने को भी आइडिया नहीं रहता है। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको लिख के दिया था डो डिड डन, ये तो नॉर्मल सी रहती है, समटाइम जो फॉर्म्स रहती हैं सिमिलर आ जाती हैं, राइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल वेयर टू यूज विच फॉर्म एंड हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू implement, otherwise it will be difficult for you to concentrate on the tense chart as well as its rules. All right, yes. So yes, these are the examples. Once again we will be going ahead, that simple present में SES and she eats, he eats भी हो सकता है, he sleeps हो सकता है, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे ही स्लेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ये स्लेप्ट हमारी सेकंड फॉर्म है। ऑलराइट, एंड गोइंग मूविंग अहेड विद द सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में हमेशा आपकी V2 आती है। V2 का मतलब एज यू नो इट्स अ वर्ब सेकंड फॉर्म, राइट। सो आई वॉक्ड टू द स्टोर, कि मैं वहां पे गई थी या गया था। इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू हैव टू गो और डू द एक्टिविटी, ऑलराइट, बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड रहती है आपके फॉर्म्स, जैसे भी आप चाहते हो। एंड नाउ सेकंड इज वी प्लेड बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स हो सकता है, वी प्लेड येस्टरडे हो सकता है, वी विल बी प्लेइंग, अगर फ्यूचरिस्टिक बात करते हो तो इट डिपेंड्स ऑन इट। ऑलराइट, सो नाउ गेटिंग बैक के मेक श्योर कि ईडी का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग टू द नंबर 3, सिंपल फ्यूचर विल प्लस वर्ब। ओके, सो नाउ नंबर 1 इज आई विल गो टू द मार्केट, कि मैं बाजार जाऊंगी या जाऊंगा। So making sure जाऊंगा, करूंगा. So ga is a form या gi is a form where you are denoting to the futuristic thing. Okay, futuristic, it depends on the situation how you are able to use the tense or according to the situation. Okay, so moving further, she will cook today, कि वो खाना बनाएगी, मतलब कि futuristic है वो बनाएगी या नहीं, that depends on it. Okay, या she will cook tomorrow. So it depends again that how she will be cooking or when she will be cooking. I hope it is useful for you to understand these rules, then only you will be gradually depending on the things that how these things will be going on. All right, so yes. So these are the things, and I hope you guys are able to understand the rules, how we are going ahead accordingly. Okay, so these are the things you have to go ahead accordingly. Yes.